హైదరాబాద్ పిఎన్ఎస్ న్యూస్ ఇండియా మా ప్రతినిధి మిర్జా ఫయాజ్ బేగ్ నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ బ్రజెల్స్ బెల్జియం నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 2025 ఉర్దూ మస్కాన్ కెల్వత్ రోడ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలో వివిధ రాష్ట్రాల నుండి జర్నలిస్టులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పాల్గొన్నారు. కాలేటి దామోదర్ గుప్తా, ఫార్మర్ పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అజీజ్ హైమద్, జాయింట్ ఎడిటర్ ఇతేమాదే ఉర్దూ డైలీ శివాజీ సర్కార్ జీ, సీనియర్ లీడర్ ఎన్యూజేఐ ఢిల్లీ రవి మీనాక్షి సుందరం, సీనియర్ లీడర్ ఎన్యూజేఐ చెన్నై సబితా కులకర్ణి, మహారాష్ట్ర సంజయ్ రాయ్, పంజాబ్ హైదరాబాద్ మొహమ్మద్ రఫీ ఉద్దీన్ గౌరీ, జనరల్ సెక్రటరీ స్టేట్ టీజీఏ మొహమ్మద్ ఖలీల్, ఆర్గనైజర్ సెక్రటరీ టీజేఏ రాజేంద్రనాథ్ తదితరులు పిఎన్ఎస్ న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ మొహమ్మద్ వలీ ఆఫీస్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. Today's world, where social media and electronic media and YouTube dominating in this field, so now NUJ has to update things and then go forward in all areas. Because, but one thing, whatever happens at how much level happens, but media people are still suffering because they have to run print to post and facilities compared to other job is concerned. This journalist job, the thankless job is for their day in and day out. When once they come out of the house, they face a lot of problems. So for that, the effectiveness of journalist act has to be made, and media council has to think over and suggest better things also, and the government also look into the journalist family as well as their other surroundings, and this accreditation also should be extended for the genuine and top journalists in every states and in offices. And now, because of social media, everyone has to prove themselves that they have to contribute at the earliest timeline. So those factors also has to be taken into account. In this regard, we, NUJ Journalist Association, planned various things and bringing magazines to serve the journalist community and bring in furthermore essential areas and aligning with Press Council, aligning with the Government of India, aligning with the INB Ministry. So many things has been planned by our President Shivaji Sarkar. So with the executive committee members, best executive members has been appointed from throughout India and other states. So based on this, things has been planned. And even pension scheme also we wish to suggest, and whatever grievances, majority will come, that also. And this highway toll also need to be considered for journalists. And once again, wage board structure has to be formed and come. So likewise, and women wing also we have, a strong wing we have. That has to be strengthened furthermore for the women's security and safety in this journalism field. And I hope how much we can achieve, but we are sure that we will achieve more for the betterment of journalist community. Thank you. नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी और मैं महाराष्ट्र से हैदराबाद आई हूँ. आप सभी का शुक्रिया कि मुझे एनयूजे संगठन जो है बहुत बड़ी संगठन है, एलोकेटेड बाय इंटरनेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ब्रुसेल, ये जागतिक संगठन से जुड़ा हुआ संगठन है. और सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगी आपके हैदराबाद आने के बाद में, कि जिस प्रकार से मुझे सरकार जो है उन्होंने जोड़ा है. लक्ष्मण जी है उपला, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. बट विदाउट इमेजिन कि जिस प्रकार से मुझे जो वाइस प्रेसिडेंट एक महाराष्ट्र के लिए चुना गया, ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए अप्रिशिएट, मतलब इस बात की खुशी है कि मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के चयन को लेकर और मुझे डायस मिलेगा, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात इससे बड़ी कोई नहीं है. और साथ ही साथ में मैं सभी का शुक्रिया इसलिए और अदा करूँगी कि जो
डायस पर मुझे आज आने का मौका मिला और आप सभी हमारे मीडिया भाई जो जितने भी हैं उन सभी ने मेरे स्पीच को भी अप्रिशिएट किया है, तो उन सभी का मैं तो शुक्रिया फिर से दोबारा अदा करूँगी। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो NUG जो संगठन है ये बहुत बड़ी संगठन है, हम उससे जुड़े तो बहुत बड़ी खुशी है। हम चाहते हैं कि जो मुझे महाराष्ट्र का जो संगठन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आज ऑल इंडिया का जो बनाया गया नेशनल कमेटी पर, तो हम अपनी संगठन को बहुत बड़ा बनाएंगे। और साथ में जितने भी महिला आप मेरे साथ में देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं इस समय जुड़े हैं। हमारे कुछ पत्रकार जी हैं, मित्र हैं हमारे, और हमारे जो दया जी है चेन्नई से, सकीना जी है बानो यहाँ से है हैदराबाद से, मिस फातिमा जी हैं वो भी हमसे जुड़ी हैं, हमारी बहन ये मेहर जी ये भी हमसे जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं वो कहीं से भी हो, पर हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। और ऐसे नहीं कि हम लोग पुरुष और महिलाएं अलग अलग हैं, आजकल महिलाएं भी सब एक साथ हैं और एक संगठन के साथ में जुड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस संगठनों को NUG के माध्यम से मैं अपनी महिलाओं को और भी मजबूत और सक्षम बनाऊँ, और साथ साथ जितना भी मेरे से NUG का जो काम जितना जैसे बढ़ेगा संगठन का, तो मैं नेशनल तक का इस संगठन को लेके जाऊँगी और मजबूती की जोड़ के साथ में मैं काम करूँगी। आपने तो मजबूती का जोड़ फेविकॉल का नाम सुना है, पर मैं NUG के साथ में महिलाओं के संगठन के साथ में मजबूती के साथ खड़े रहूँगी, स्ट्रांगली खड़े रहूँगी। कोई भी प्रॉब्लम से भी महिलाओं को आते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम से क्यूरीज है, मैं उसको निभाने का काम पूरा करूँगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।